Assalamu alaikum. The topic of our presentation is software testing techniques. Starting with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Group members are Usman Khalid and Farhan Ashraf. What is software? Software is a set of instructions stored digitally within the computer memory which tells the computer system what to do. And what is testing? Testing is a process of executing a program with the intention of finding errors. Software testing, thus, software testing is a process that should be done during the development process. In other words, software testing is a verification and validation process. Purpose of software testing. Software testing verifies that system meets the certain requirements. Let's suppose the functional, performance, reliability, security, usability, and so on. This verification is done to ensure that we are building the system right. Software testing techniques. Software testing is an interaction which is utilized to gauge the nature of programming created. It is likewise a course of covering mistakes in a program and make it a doable task. It is helpful. Course of executing programs with the purpose of tracking down bugs. The graph beneath addresses the absolute most common strategies of programming testing which are arranged by region. So in this we can see there are like two types. There are functional types of software testing and non-functional. So in the functional we do in the techniques there are black box testing, white box testing. Then yeah. So let me see. I cannot go back. Why? Okay. So what is white box testing? White box testing is a software testing method in which the internal structure of the item being tested is known to the testers. So white box testing is often used for verification and done by developers, and we test the advantages of whiteboard testing. Testing can be commenced at an earlier stage. One need not to wait for the graphical user interface to be available. Testing is more through with the possibility of covering most parts, or the other advantage of whiteboard testing is that it helps in optimizing the disadvantages of whitebox testing. As knowledge of code and internal structure is prerequisite, a skilled tester is needed to carry out this type of testing, which increases the cost, not looking at the code in a runtime environment. So, what is black box testing? Black box testing is a software testing method in which the internal structure of item being tested is not known to the testers. Black box testing is often used for validation. The black box testing is done by professional testing. Advantages testers can be non-technical. Tester needs no knowledge of implementation, including specific programming language, and test will be done from an end user point of view because an end user should accept the system. Then there are few disadvantages in black box testing, which are like not all the properties of a software product can be tested. The reason for a failure is not found. Only a small number of possible input can be tested, and many program paths will be left untested. So, to cover the next part, I would like to call my group partner Usman Khalid. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for Anushraf. Okay, grey box testing. ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है ना जो ये जैसे कि फरहान ने पहले बताया वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बताया, तो ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो है ना इन दोनों का कम्बिनेशन है. यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. और इसका जो एम होता है ना ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का, इसका एम होता है कि डिफेक्ट्स को ये कैच करे, सर्च करे और उसको ठीक करे. द एम ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू सर्च फॉर द डिटेक्ट्स इफ एनी ड्यू टू इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो उसको वो टेस्ट करे, और अगर एप्लीकेशन कोई बनाई है तो वो गलत इस्तेमाल हो रही है, मतलब कि उसका यूज़ ठीक से नहीं हो रहा, वो कुछ और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए हम ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, जो कि दोनों आ जाते हैं इसमें. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी आ जाती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी आ जाती है. ओके, नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग. एक इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग का पार्ट है ये. परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्पीड और इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. यानी कि ये किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का की स्पीड को
एनहांस करने के लिए टेस्ट किया जाता है, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस के वो कितना इफ़ेक्टिव हमारा सॉफ्टवेयर बना है उसकी टेस्टिंग के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम करते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लें कि हम लोग ये अपने बेरिया यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे यूज़र्स एक सेम टाइम पे उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स सेम टाइम पे एक्सेस करने लगते हैं, तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है उस सॉफ्टवेयर की कि वो इतने यूज़र्स को हैंडल कर सके। तो ये लोड टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस वो कितनी कैपेसिटी वो बर्दाश्त कर सकता है, कितना लोड अपने ऊपर वो बर्दाश्त कर सकता है। और इसमें दूसरी है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में होता ये है कि जिस तरह वहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स, लोड टेस्टिंग में नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लोड क्रिएट हो जाता है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग में जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कह लें कि आप डाटा हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर में आ जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉफ्टवेयर के लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो उसकी वजह से हम ये स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं ताकि वो पता चले कि वो कितना डाटा यूज़ कर सकता है एक सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है। आगे है रिलायबिलिटी टेस्ट। Live testing is the most important activity in reliability program which is in need of largest fund and manpower. It is used to design a product and subsequent product. It also provides information for entire life about maintenance plan, corrective actions or design and process for a test product. रिलायबिलिटी टेस्ट में हम कोई भी जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है या प्रोग्राम बनाया है उसको हम उसका डिज़ाइन टेस्टिंग भी उसमें आ जाती है कि डिज़ाइन उसका किस तरह का बना है, ये क्या वो डिज़ाइन यूज़र्स के लिए यूज़फुल है, इजी टू यूज़ है, करेक्टिव एक्शंस मतलब कि उसके जो सॉफ्टवेयर जो हमने यूज़र्स के लिए बनाया है क्या वो करेक्ट परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इस सब के लिए हम जो रिलायबल है या नहीं है वो एक यूज़र के लिए, तो रिलायबिलिटी टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है टेस्टिंग का, क्योंकि आजकल जितनी भी हम लोग मतलब कि ऑनलाइन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो सिक्योरिटी का रिस्क होता है कि सिक्योरिटी में प्राइवेसी लीक ना हो जाए यूज़र्स की। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें सिक्योरिटी कह लें कि बहुत मेन पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं हम कर सकते। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग is the process to determine that an information system protects data and maintains functionality to check whether there is any information leakage। कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो क्या वो प्राइवेसी के हिसाब से रिलायबल है या नहीं है, उसमें जो प्राइवेसी है यूजर्स जो यूज़ करेंगे उसको, तो क्या वो उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी प्राइवेट चीज़ें या प्राइवेट कुछ भी उनका लीक होने के कोई चांसेस तो नहीं है। ये चीज़ हम चेक करने के लिए सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर।